Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome, dear viewers and dear students, to this session. As already I have promised that in the next session we are going to deal with dynamic verbs. So as far as lexical aspect of verbs is concerned, we have two types of verbs. Generally we have two types. We have stative verbs and we have dynamic verbs. And stative verbs, as far as stative verbs are concerned, we have discussed them in the previous section, and in this section we are going to deal with dynamic verbs. तो जहाँ तक हमने देखा स्टेटिव वर्ब्स के पस मंज़र में हमने देखा कि स्टेटिव वर्ब्स के लिए कोई पर्टिकुलर एजेंट नहीं होता है, यानी कोई डुओ ऑफ एक्शन देयर डज नॉट take there is not an actual action taking place in that very case. हम देखते हैं कि स्टेटिव वर्ब्स के पस मंज़र में कोई एक्चुअल काम नहीं होता है, बल्कि rather stative verbs सिर्फ एक्सप्रेस करते हैं states और they give us situations. Now as far as dynamic verbs are concerned, तो जहाँ तक dynamic verbs है तो lexical aspect में you have to remember always जो हमारे dynamic verbs है, there must be an agent, there must be a duo of action. So जहाँ तक verbs that require some input of action by the subject, verbs that require some input of an action by the subject are known as dynamic verbs. तो आपको याद रखना चाहिए कि वो अफ़आल यानी कि वो फ़ेल की वो किस्म जहाँ पर आपको एक इनपुट की ज़रूरत पड़ती है बाय द सब्जेक्ट, तो वो वाले अफ़ाल या वो फ़ेल, उस किस्म का फ़ेल डायनेमिक फ़ेल कहलाता है. दैट वेरी वर्ब इज़ नोन एज डायनेमिक वर्ब. Again I will repeat, verbs that require some input from the subject, that require the verbs that require some input of action from the subject are known as dynamic verbs. तो dynamic verbs जब होगा तो वहाँ पर फ़ाइल ज़रूर होगा. And we have three types of dynamic verbs. We have activity verbs, we have achievement verbs and we have accomplishment verbs. अब dynamic verbs जैसा मैंने कहा कि जब डायनेमिक वर्ब होगा तो वहाँ पर एक फ़ाइल का होना लाजिम है, और चाहे फिर डायनेमिक वर्ब्स के आगे तीन अनवा है, तीन डिफरेंट काइंड्स है, तीन डिफरेंट किस्में हैं, एक्टिविटी वर्ब्स, अचीवमेंट वर्ब्स एंड अकॉम्प्लिशमेंट वर्ब्स. तो एक्टिविटी वर्ब्स क्या है, अचीवमेंट वर्ब्स क्या है और अकॉम्प्लिशमेंट वर्ब्स क्या है, ये हम पढ़ने जा रहे हैं. फर्स्ट वी विल डील विद वी आर टॉकिंग अबाउट एक्टिविटी वर्ब्स. तो फॉर एग्जाम्पल वी हैव वर्ब्स लाइक develop, like grow, like work. So we have verbs like develop, we have grow and we have work. These are activity verbs. And we will be able to identify whether there is an activity verb or an achievement verb or an accomplishment verb. We'll understand that. हम वो समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम एक सेंटेंस में जो वर्ब दिया गया होगा उसको पहचानेंगे, क्या वो एक्टिविटी वर्ब है, क्या वो अचीवमेंट वर्ब है या क्या वो अकॉम्प्लिशमेंट वर्ब है. तो ये सब जानना क्यों ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि if we really want to comprehend English language in its real essence, then we have to dig deeper. अगर यकीनन हम चाहते हैं, हम वाकई में चाहते हैं कि हमारी जो पकड़ इंग्लिश ज़बान में अच्छी होनी चाहिए, हम इंग्लिश ज़बान को अच्छे से समझने चाहिए, तो हमें फिर हर एक वर्ड क्लास को डीपली अंडरस्टैंड करना पड़ेगा. तो एक्टिविटी वर्ब्स, फॉर एग्जाम्पल आई हैव रिटन 3 वर्ब्स, develop, grow and work. Such verbs show or reflect an action that is going for
indefinite period of time. First of all, you have to remember, जो एक activity verb होता है, that is going for an indefinite period of time. Second point, they lack endpoint. For example, if I say that boys are playing, अगर मैं ये कहूँ कि लड़के खेल रहे हैं, they are playing, तो this जो playing है, this is an activity verb and it is going for indefinite period of time. You do not know when they are going to stop playing cricket or playing football or playing hockey or tennis or any game or sports. Now, so they lack endpoint. There is no endpoint as far as activity verbs are concerned. And they may be continuous or they may be changing. जहाँ तक activity verbs की बात है, या तो वो continuous हो सकते हैं या वो changing हो सकते हैं. तो अगर हम observe की बात करें, pull की बात करें, stay की बात करें, swim की बात करें, these are some activity verbs which are continuous. आप ऑब्जर्व करते हैं कोई चीज़, तो indefinite period of time, this is continuous process. जब तक आप ऑब्जर्व करते हैं, आज ऑब्जर्व करेंगे, कल ऑब्जर्व करेंगे, कहाँ तक ऑब्जर्व करेंगे, you do not know. We cannot say. It lacks an end point. Okay, so or these activity verbs can be changing. For example, decline. तो डिक्लाइन किसी का डिक्लाइन तभी होगा जब उसका पहले उरूज होगा, किसी का ज़वाल तभी होगा जब पहले उसका उरूज होगा. तो इसी तरह डेवलप, इट इज़ ऑल्सो चेंजिंग, एंड ग्रो, इट इज़ ऑल्सो चेंजिंग. तो आप सिंपली इफ आई से द प्लांट ग्रोज, द प्लांट ग्रोज और द प्लांट्स ग्रो, तो ये वाला वर्ब जो है इट इज़ एक्टिविटी वर्ब बट इट इज़ चेंजिंग. आज इतना बड़ा है, कल इतना, परसों इतना बड़ा होगा, so on and so forth. So at the last point, as far as activity verbs are concerned, they can occur or they can come in a progressive aspect. Progressive aspect of the activity verbs is possible. So ये बातें जो आपने याद रखनी थी activity verbs के बारे में, कि they are going for indefinite period of time, they lack an end point, and they can be continuous, they can be changing, and they can come or they can occur in progressive aspect. So this is all about activity verbs. Now we are going to deal with achievement verbs. Okay, in the next session we are going to deal with achievement verbs.